अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। अब दो सर्कल्स की बात करेंगे तो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होना चाहिए। तो अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं और सपोज उनके सेंटर्स C1 और C2 हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम ज्वाइन करेंगे, सपोज ये रेडियस R1 और ये दूसरा रेडियस R2, तो जब हम बात करते हैं उनके बीच में एंगल, तो बेसिकली एंगल उनके टेंजेंट्स के बीच में होता है। तो हमें ये एंगल निकालना है जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा। सपोज ये एंगल थीटा है, तो हमें ये थीटा निकालना है। अब सपोज C1 C2 के बीच का डिस्टेंस d है, तो हमारे पास d है, R1 है, R2 है, तो यहां से d जो है वो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। हम यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला है कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स which is given by theta can be written as cos theta equals d square minus r1 square minus r2 square upon 2 times r1 r2। तो अगर आपके पास d है, r1 r2 है, तो वहां से आप दो सर्कल के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोसाइन फॉर्मूले से आता है, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री और कोसाइन फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वहां से आप दो सर्कल्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। और याद रखना है कि दो सर्कल्स के बीच का एंगल उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स बनते हैं वो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है वो आती है कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो कंडीशन इज सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो इसका मतलब दो सर्कल्स एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज आता है। तो अगर हम cos थीटा को 90 पुट करते हैं तो वहां से क्लियरली आ जाएगा d स्क्वायर इक्वल्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो जैसे दो सर्कल्स हैं हमारे पास जो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। उनके सेंटर सपोज C1 C2 है, तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इनके जो टेंजेंट्स हैं वो टेंजेंट्स एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे। तो यहां पे ये एंगल हमारा 90 डिग्रीज है। अब अगर इस टेंजेंट को एक्सटेंड करते हैं तो ये नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल उसके सेंटर से पास करेगा। तो इस केस में जो टेंजेंट्स हैं वो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो क्लियरली यहां से आपको दिखाई देता है कि ये जो C1 C2 स्क्वायर है वो बराबर होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के, या फिर हम लिख सकते हैं d स्क्वायर इक्वल्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर दो सर्कल्स के इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस f2y प्लस c2 इक्वल 0, तो यहां से C1 C2 क्या है, g1 माइनस g2 होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 होल स्क्वायर। अब r1 स्क्वायर कितना, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, और इसी तरह से r2 स्क्वायर हो गया g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, और यह है g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। तो यहाँ पे g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर g2 स्क्वायर f2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहां से वो सीधे रिजल्ट आता है कि 2 टाइम्स g1 g2 प्लस f1 f2 बराबर होना चाहिए c1 प्लस c2 के। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमें कुछ पैरामीटर निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर लोकस का सवाल है जहां पे हमको लोकस सॉल्व करना है, कंडीशन सॉल्व करना है, तो वहां पे हम C1 C2 स्क्वायर इक्वल्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यूज करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी के लिए। अब हम बात करेंगे सर्कल्स में एक और कॉन्सेप्ट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट है रेडिकल एक्सिस। अब सबसे पहले रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है।
रेडिकल एक्सिस बेसिकली लोकस है उस पॉइंट का जिससे अगर दो दिए हुए सर्कल्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल आते हैं। और कई बार हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलने के बजाय पावर ऑफ अ पॉइंट भी बोलते हैं कि उस पॉइंट से दो गिवन सर्कल का पावर ऑफ पॉइंट इक्वल आना चाहिए। सो इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट with respect to two given circles such that their length of tangents are equal। तो जैसे दो सर्कल्स हैं हमारे पास, एक का इक्वेशन s इक्वल्स टू 0 और दूसरे सर्कल का इक्वेशन s डैश इक्वल्स 0। सपोज ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c और रादर 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल 0। अब एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे दोनों सर्कल्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट की लंबाई बराबर आती है। तो यानी कंडीशन हमें दिया है कि अगर ये पॉइंट P है तो PA बराबर होना चाहिए PB के। तो हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है जहां पे PA बराबर PB है। अब क्योंकि ये लोकस प्रॉब्लम है, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द पॉइंट। तो सबसे पहले हम पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। ये पॉइंट है P और उसको कुछ मान लेते हैं ये पॉइंट है अल्फा बीटा। दूसरा स्टेप है जो भी कंडीशंस दिए हैं उससे इक्वेशंस लिखना। अब कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे कि PA बराबर PB। अब PA क्या है? P है अंडर रूट S1। तो इसका मतलब ये पॉइंट का वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, और क्योंकि PA और PB बराबर है इसका मतलब PA स्क्वायर बराबर होगा PB स्क्वायर के, जो कि है इसका पावर। तो सीधे अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g1 अल्फा प्लस 2f1 बीटा प्लस c1, और ये बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g2 अल्फा प्लस 2f2 बीटा प्लस c2। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कट गया, ये इक्वेशन आएगा 2g1 माइनस g2 अल्फा प्लस 2f1 माइनस f2 बीटा प्लस c1 माइनस c2 इक्वल 0। अब एंड में अल्फा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट का लोकस आएगा वो आएगा आपका 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स 0। और बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली वो लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट से अगर हम ये सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमेशा दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर आएगी। तो किसी भी पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो सारे केस में ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगा। तो इस पॉइंट का लोकस एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन को हम बोलते हैं ये है हमारा रेडिकल एक्सिस। अब ये जो लाइन का इक्वेशन आता है इसको हम देखें तो बेसिकली हमको क्लियरली दिखाई देता है कि अगर पहले सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास सेम इक्वेशन आएगी। तो जब भी हमें दो सर्कल्स दिए हैं जिनका इक्वेशन s इक्वल टू 0 और s डैश इक्वल्स टू 0 है तो हम सीधे उसका रेडिकल एक्सिस लिखेंगे s माइनस s डैश इक्वल्स टू 0, जहां पे s और s डैश दोनों ही जनरल फॉर्म में है। तो कभी भी हमें रेडिकल एक्सिस निकालना है तो सीधे एक सर्कल के इक्वेशन में से दूसरे सर्कल का इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म है वो एक जनरल फॉर्म होना चाहिए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए दोनों ही इक्वेशंस के लिए, क्योंकि इवेंचुअली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे और तभी आपको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि जैसे एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 = 0 और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x -6y प्लस 1 = 0। अब ये दोनों सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। तो सीधे क्या करना है, एक सर्कल के इक्वेशन में से दूसरे सर्कल का इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सपोज ये पहले इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 2x -6y प्लस 5 = 0। तो ये दोनों सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस आएगा 2x -6y प्लस 5 = 0। अब आते हैं रेडिकल एक्सिस और उसके रिजल्ट्स पे। तो पहला है रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन। तो रेडिकल एक्सिस वो पॉइंट का लोकस है जिससे दो गिवन सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है या फिर उसका पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल्स इज इक्वल। दूसरा जो हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस वो आता है आपका s - s' = 0 से, और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आता है 2g1 - g2x प्लस 2 f1 - f2y प्लस c1 - c2 = 0। अगर हम रेडिकल एक्सिस का स्लोप देखें तो रेडिकल एक्सिस का स्लोप आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो जाएगा माइनस g1 - g2 अपॉन f1 - f2। और अगर हम ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स का स्लोप देखें तो ये है c1 और सपोज ये है c2, तो ये m जो है वो आएगा आपका f1 - f2 अपॉन g1 - g2। तो अगर ये m1 है और ये m2 है तो क्लियरली यहां से दिखता है कि m1 × m2 = -1। तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस जब भी आएगा वो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज परपेंडिकुलर टू line joining their centers। तो केस चाहे कोई भी हो लेकिन हमेशा ये रेडिकल एक्सिस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब आते हैं हमारे चौथे केस की तरफ, और चौथा केस है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जैसे हमारे पास इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए कंडीशन होता है C1 C2 छोटा होना चाहिए R1 + R2 के, बट बड़ा होना चाहिए मॉड ऑफ R1 - R2 के। तो अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में इनका जो रेडिकल एक्सिस आता है वो इनका कॉमन कॉर्ड होता है। तो इन केस ऑफ टू intersecting circles, their radical axis is their common chord। तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस A और B हैं, तो ये जो लाइन है इसको बोलेंगे ये इनका कॉमन कॉर्ड, और इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में जो कॉमन कॉर्ड है वही उनका रेडिकल एक्सिस होता है। तो अगर कभी भी आपको दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स दिए हैं और ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस या इनकी कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालिए, तो सीधे आपको रेडिकल एक्सिस निकालना है, यानी कि सीधे आपको s - s' = 0 करना है, वहां से आपको
ये कॉमन कॉर्ड का जो कि इसका रेडिकल एक्सिस है उसका इक्वेशन मिल जाएगा। पांचवा केस है जब सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो सर्कल्स एक दूसरे को या तो एक्सटर्नली टच कर सकते हैं या फिर वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर सकते हैं। अब पहले वाले केस में C1 C2 होता है R1 प्लस R2, और ये दूसरे केस में C1 C2 होता है आपका मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अब ये दोनों ही केस में जो आपका रेडिकल एक्सिस आता है वो आता है टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर हम इनका रेडिकल एक्सिस निकालेंगे तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट आता है ये वो लाइन होगा। तो कंडीशन ये है, इफ two circles touch each other, then common tangent at their point of contact is given by their radical axis। तो बेसिकली अगर आपको दो टचिंग सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट निकालना है तो यहां पे भी आपको उनका रेडिकल एक्सिस ही निकालना पड़ेगा। और रेडिकल एक्सिस बेसिकली है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इक्वल्स 0। तो यहां से आपको इनका रेडिकल एक्सिस आएगा। तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो रेडिकल एक्सिस उनका कॉमन कॉर्ड होगा, और दो सर्कल्स अगर टच करते हैं तो वो उनका कॉमन टेंजेंट होगा उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। छठा रिजल्ट है कि अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर लाई करता है तो वो केस में इसका जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो ये सर्कल से बाहर आएगा। सो इफ one circle lies completely inside the other, then their radical axis lies outside both the circles। और सातवां केस है जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो वो केस में जो रेडिकल एक्सिस आता है वो हमेशा दोनों सर्कल्स के बीच में आता है। तो इनका जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो ये दोनों के बीच में रहेगा। सो इफ वन सर्कल लाइज कंप्लीटली आउटसाइड द अदर सर्कल, सो इफ वन सर्कल लाइज completely outside the other, then their radical axis lies in between the circle, lie in between the circles। तो ये आपका सातवां पॉइंट। और सिर्फ एक ही केस है जहां पे रेडिकल एक्सिस नहीं आता है, और वो केस है कि अगर हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो वो केस में कोई भी रेडिकल एक्सिस नहीं आएगा। सो रेडिकल एक्सिस डजंट एग्जिस्ट फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बेसिकली दोनों इक्वेशंस में सारे टर्म्स सेम होंगे सिवाय कांस्टेंट्स के। तो यहां पे हमारे पास एब्सर्ड रिजल्ट आएगा सम कांस्टेंट इक्वल्स 0, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस डिफाइंड नहीं है। अब जो नवा पॉइंट है वो है ये जो रेडिकल एक्सिस है वो सारे कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करता है। तो रेडिकल एक्सिस
bisects all common tangents to two circles। तो दो सर्कल्स अगर हमको दिए हैं तो वो केस में इनका जो रेडिकल एक्सिस है वो इसके सारे टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करेगा। अब आते हैं हमारे 10वें रिजल्ट पे, और ये है कि अगर दो सर्कल्स हमारे पास हैं, सपोज s इक्वल्स टू 0 और s डैश इक्वल्स टू 0 और उनका रेडिकल एक्सिस है s माइनस s डैश इक्वल्स टू 0, तो इस रेडिकल एक्सिस पे अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और वो जो सर्कल का रेडियस है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और हमको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल्स के लिए इक्वल रहेगा। तो जैसे ये PA है और ये PB है, तो इस पॉइंट को मानते हुए जो भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो सर्कल इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो सर्कल है ये दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो कंडीशन ये, द सर्कल विद सेंटर ऑन रेडिकल एक्सिस, द सर्कल विद सेंटर ऑन रेडिकल एक्सिस एंड रेडियस एस length of tangent from it to the circles cuts the two circles orthogonally। तो सीधा सा मतलब यह है कि रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के और इसके जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसको रेडियस मान के जब भी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल इन दोनों गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो ये सर्कल हमेशा ऑर्थोगोनल होगा दो गिवन सर्कल्स के। तो ये है आपका 10वां रिजल्ट। और इसी से मिलता जुलता एक 11वां रिजल्ट है, और वो ये है कि अगर दो सर्कल्स हमको दिए हैं s इक्वल्स टू 0 और s डैश इक्वल्स टू 0, तो एक ऐसा सर्कल जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है उसका सेंटर आपका रेडिकल एक्सिस के ऊपर आएगा। तो कंडीशन ये है, द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स which cuts two circles orthogonally lies on their radical axis। तो अगर एक सर्कल है जो दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है तो उसका सेंटर हमेशा रेडिकल एक्सिस के ऊपर आएगा। अब आते हैं हमारे 12वें कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ 3 सर्कल्स है s इक्वल्स टू 0, s डैश इक्वल्स टू 0 एंड s डबल डैश इक्वल्स टू 0, तो ये जो सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैं इनके रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होंगे। तो फंडामेंटल है रेडिकल एक्सिस ऑफ three circles whose centers are non-collinear।
तो सेंटर्स नॉन कोलिनियर होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंटर्स कोलिनियर हैं तो वो केस में रेडिकल एक्सिस पैरेलल आएंगे। तो 3 सर्कल जिनके सेंटर्स नॉन कोलिनियर हैं तो उनके जो रेडिकल एक्सिस हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, आर ऑलवेज। तो कोई भी 3 सर्कल ले लो जिनके सेंटर्स नॉन कोलिनियर हैं, तो जैसे ये पहले 2 का रेडिकल एक्सिस, ये दूसरे और तीसरे का रेडिकल एक्सिस। अब पहले और तीसरे का जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करके जाएगा। तो जो तीनों रेडिकल एक्सिस हैं, ये तीनों रेडिकल एक्सिस आपके कॉन्करेंट होंगे, और ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वो है आपका रेडिकल सेंटर। एंड their point of concurrence is called as radical center. तो 3 सर्कल्स जिनके सेंटर नॉन कोलिनियर हैं, उस केस में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे तीनों रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे और उस पॉइंट को हम बोलेंगे वो है हमारा रेडिकल सेंटर। अब रेडिकल एक्सिस बाय डेफिनेशन वो लाइन है जिसके हर पॉइंट से 2 सर्कल्स पे लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है। तो यहीं से हम ये भी बोल सकते हैं कि रेडिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से तीनों सर्कल्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका बराबर आएगा। तो जैसे अगर ये पॉइंट P है और ये है A, B और C, तो रेडिकल सेंटर से तीनों सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो तीनों का लेंथ बराबर आएगा, यानी PA इक्वल्स PB इक्वल्स PC। तो इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं द पावर ऑफ रेडिकल सेंटर with respect to 3 circles is equal. अब इसमें एक और कंडीशन आती है और इस पे भी कई सवाल बनते हैं, वो ये है कि एक ऐसा सर्कल जो कि 3 दिए हुए सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। 3 सर्कल्स दिए रहेंगे और तीनों सर्कल्स नॉन कोलिनियर रहेंगे उनके सेंटर्स। तो 3 सर्कल्स हैं, सपोज S इक्वल 0, S डैश इक्वल 0 और S डबल डैश इक्वल 0, और ये कहेगा कि एक ऐसा सर्कल बताओ जो कि इन तीनों को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। अब हमको पता है कि कोई भी 2 सर्कल्स के लिए जो सर्कल इनको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा उसका सेंटर लाई करेगा उनके रेडिकल एक्सिस पे। इसी तरीके से ये दोनों सर्कल्स के लिए भी जो ऑर्थोगोनल होगा वो लाई करेगा इनके रेडिकल एक्सिस पे, और पहले और तीसरे के लिए भी जो होगा वो लाई करेगा इनके रेडिकल एक्सिस के लिए। तो ऐसा सर्कल जो तीनों ही सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करेगा तो उसका सेंटर आएगा उनके रेडिकल एक्सिस पे। तो फंडामेंटल ये है सेंटर ऑफ अ सर्कल which cuts the 3 given circles orthogonally will lie on radical center. तो अगर आपको ऐसा सर्कल निकालना है जो 3 गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करे तो उसका सेंटर निकालने के लिए तो आपको बेसिकली उनके कोई भी 2 रेडिकल एक्सिस निकालने हैं और उनको सॉल्व करेंगे तो वहां से आप उनका रेडिकल सेंटर निकाल सकते हैं, और वो जो रेडिकल सेंटर आएगा वो उस सर्कल का सेंटर होगा, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्योंकि ये पॉइंट से तीनों सर्कल के अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो तीनों टेंजेंट्स बराबर आते हैं, PA बराबर
PB बराबर PC। तो ये जो सर्कल आएगा जो इनको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा उसका रेडियस इनके लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रेडियस ऑफ सच सर्कल is equal to length of tangent from radical center। तो ये सर्कल निकालने के लिए आपको सेंटर और रेडियस चाहिए, तो सेंटर आ जाएगा रेडिकल सेंटर से और ये पॉइंट से किसी भी सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, वहां से आपको उसका रेडियस मिल जाएगा। तो ये है सर्कल का रेडियस। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो आप इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें 14वां चीज जो आता है वो है कि आपको दो सर्कल्स दिया रहेगा, एक है s इक्वल्स टू 0 और दूसरा है s डैश इक्वल्स टू 0। और इसमें ये कहता है कि एक सर्कल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो जैसे ये केस में s डैश इक्वल्स टू 0 बाइसेक्ट्स s इक्वल्स 0। तो यहां पे बाइसेक्ट कौन हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है s इक्वल्स टू 0। तो अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो मतलब ये जो लाइन है वो उसका डायमीटर होना चाहिए, और ये जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है बेसिकली वो है इसका कॉमन कॉर्ड। तो कंडीशन ये है कॉमन कॉर्ड जो कि बेसिकली है इसका रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स, वो पास करना चाहिए पहले सर्कल के सेंटर से। विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल बीइंग बाइसेक्टेड। जो सर्कल बाइसेक्ट हो रहा है उसका सेंटर इस रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए। तो ये है आपका 14th पॉइंट। और अब आते हैं इसके 15वें पॉइंट पे, और 15वां पॉइंट है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, सपोज ABC, और AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और AC को डायमीटर मान के दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये BC के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। अब बेसिकली इनका रेडिकल एक्सिस देखें तो ये लाइन होगी। अब क्योंकि AB डायमीटर है तो ये 90 और AC भी डायमीटर है तो ये 90, तो इनका जो कॉमन कॉर्ड आएगा वो ये ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होगा। तो इस केस में इनका जो कॉमन कॉर्ड है और बेसिकली जो इनका रेडिकल एक्सिस है वो आपका एल्टीट्यूड होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर एक्सटेंड करते हैं कि 3 सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन sides of a triangle as diameter, then तो हमें पता है कि अगर साइड्स को डायमीटर लेके अपने सर्कल्स ड्रॉ करते हैं तो उनका रेडिकल एक्सिस उसका एल्टीट्यूड होगा। तो इसी तरीके से अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो तीनों सर्कल्स के लिए या तीनों साइड्स के लिए जो आपके रेडिकल एक्सिस आएंगे वो आपके एल्टीट्यूड्स आएंगे। और रेडिकल एक्सिस कहां इंटरसेक्ट करता है? रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्ट करता है रेडिकल सेंटर पे, और क्योंकि रेडिकल एक्सिस आपके एल्टीट्यूड्स हैं
तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। तो इस केस में जो आपका रेडिकल सेंटर आएगा वो आपका ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। तो ये है आपका 15वां पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स touches this other circle, then show that either G is 3/4 or F is 2. So first we'll find radical axis of the two circles, and we know that equation of radical axis is given by S1 minus S2 equals 0, where S1 and S2 are equation of these two circles in general form. So S1 is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c, and then minus, and the other one is x square plus y square plus 3x by 2 plus 4y plus c equals 0. Now here x square plus y square and the c will cancel. So we'll get this as 2g minus 3 by 2x plus 2f minus 4y, it is equal to 0. Now the question says this line, it touches this circle. Now center of this circle is at minus 1, 1 and its radius is 1 unit. So if we draw this circle, it will touch x-axis and y-axis. So basically from the origin, the two lines which are tangent to the circle are x-axis and y-axis. Now for x-axis, equation is y equals 0. In that case, this coefficient, it should be 0. So either it will be either 2g minus 3 by 2, it must be 0, or it should be this y-axis, that is x equals 0, where we'll have 2f minus 4 equals to 0. That means either this g, it must be 3 by 4, or f must be 2. And this is what we need to prove in this question. Now here the question is, find the equation of circle passing through origin if the line pair xy minus 3x plus 2y minus 6 equals to 0 is orthogonal to it. Now line orthogonal to a circle is basically its normal, and these lines, they'll pass through center of the circle. So basically point of intersection of this pair of lines will give us center of this circle. Now we can write this as x y minus 3 plus 2 y minus 3 equals 0, or x plus 2 y minus 3 equals 0, that is value of x is minus 2 and value of y is 3. So center of this circle is at minus 2, 3. And this circle, it passes through origin, that means value of c is 0. So this equation will be x square plus y square plus 2gx. So there will be plus 4x plus 2fy minus 6y equals 0. Now these two circles, they intersect orthogonally. So that means 2 g1 g2. Now g1 in this case is 2 and g2 is minus k by 2 plus f1 f2, and f1 is minus 3 and f2 is k, and it is equal to c1 plus c2. So c1 is 0 and c2 is minus 8. So here this 2 and 2 will cancel. This is minus 8k equals minus 8, that is the value of k is 1. In this case, value of k is 1, and that is the answer to this question. Now here the question is, show that the locus of centers of the circle which cuts two given circle orthogonally is a straight line, and hence deduce the locus of center of circles which cuts the three circles orthogonally, and interpret the locus. Now let the center of the circle be minus g minus f, and suppose constant term in the equation be c.
Now it is orthogonal to two circles, say given by parameters G1 F1 C1 and G2 F2 C2. Now if these first two set of circles they are orthogonal, then we'll get 2 G1 plus F1 will be equal to C plus C1, and orthogonality for these two will be 2 G2 plus F2 and will be C plus C2. Now here we'll eliminate this C by subtracting, so we'll get 2G G1 minus G2 plus 2F F1 minus F2 and will be equal to C1 minus C2. Now we have to find this locus. Now if it is locus problem, we write minus G as alpha and minus F as beta. So we'll get 2 G1 minus G2 alpha plus 2 F1 minus F2 beta, and here we get this as minus C1 minus C2. So it will be plus C1 minus C2 equals 0. So this locus will be 2 G1 minus G2x plus 2 F1 minus F2y plus C1 minus C2 equals to 0, which is nothing but equation of a radical axis of these two circles. So essentially, locus of center of a circle which intersects two given circle orthogonally will be their radical axis. Now using the same result, we can find locus of centers of circles which cuts these two circles orthogonally. So basically we have to find their radical axis. Now radical axis is given by S1 minus S2 equals 0. So here x square plus y square will cancel. So we get 4x minus of minus 5x. So there will be this 9x and then minus 6y minus 4y minus 10y and then 9 minus 2 is 7. So it will be this 9x minus 10y plus 7 equals 0. And the interpretation is that this locus is radical axis of the two circles. Now here the question is we need to find equation of circle cutting these three circles orthogonally. Now we have already proved this result that for two circles, the circle which is orthogonal to both of them, its center will lie on radical axis. Now if we take three circles, then center of the circle will basically be radical center for the three circles. So what we'll do is we'll find radical axis for first two circles. So it will be this x square plus y square plus 2x plus 3y minus 7 equals 0. And here it is x square plus y square plus 5x minus 5y plus 9 equals 0. Now we'll subtract. First from second, we'll get 7x minus 8y plus 16 equals 0. And then we'll find radical axis for these two circles. So we subtract it, we'll get 2x minus 4y plus 20 equals 0. I will multiply this with 2. So it will be 4x minus 8y plus 40 equals 0. And we'll subtract second from first. So it will be this minus plus minus 8y will cancel. So it will be this 3x and that will be equal to 24. That is value of x is 8. And if we put x as 8, it will be 16, 36, 9. So value of y will be 9. So center of the circle which is orthogonal to all three circles is at 8, 9, which is the radical center for these three circles. And since the circle is orthogonal to all the three circles, so its radius will be given by length of tangent and there will be simply under root S1. So what we'll do is we'll simply take equation of any one circle and put the value of x and y in that. So it'll be this 64 plus 81 minus 16 plus 27 minus 7, which is under root 149. Once we have center and radius, we can write equation to this circle and that will be x minus 8 square plus
y minus 9 whole square, and it is equal to 149. And if we simplify this, we can write x square plus y square minus 16x minus 18y, and here it is 81 plus 64, 145 minus 149 will be simply minus 4 equals 0, and that's your option A. So in order to find center of a circle orthogonal to three given circles, you need to find their radical center, and its radius will be given by length of tangent to any of the three circles. Now here the question is, if circumference of this circle is bisected by another circle, then P plus Q is equal to what? Now if the second circle, it bisects this first circle, then their common chord, or basically their radical axis, will pass through center of this first circle. So which is the circle that is being bisected? So this is the circle which is being bisected. Its center is at 1, minus 4. And if we have to find their common chord, or basically their radical axis, will be given by S1 minus S2. So if we subtract this, we'll get this as 6x plus 4y plus P plus Q equals 0. And this common chord will pass through center of this first circle which is being bisected. So we'll put this center here. So it will be this 6 minus 16 plus P plus Q equals 0. Value of P plus Q will be equal to 10, and that's your option C. Now here the question is, we are given two statements, and if we look at the second statement, it says radical axis for two intersecting circle is a common chord. Now this is a standard result. So if we have two intersecting circles, then this common chord will be their radical axis. So that means this statement 2 is correct. And statement 1 is, if we have three circles which are such that their centers are non-collinear, then exactly one circle exists which cuts the three circles orthogonally. Now if we have three circles with different centers, we know the result that center of the circle which cuts two circles orthogonally lie on their radical axis. So basically for three circles, center of such circle will lie on their radical center, and there is only one radical center possible, and its radius is length of tangent to any circle from this radical center. So that means there is only one such circle possible. So statement 1 is also correct. Now both the statements are correct, but statement 2 is not a correct explanation to statement 1. So that means this answer is B. Statement 1 is true and statement 2 is true, but statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Now the question is, the radical center of three circles described on the sides x plus y equals 5, 2x plus y minus 9 equals 0, and x minus 2y plus 3 equals 0 of a triangle as diameters is. Now slope of this line is minus 2 and slope of this line is 1 by 2. So basically these two lines, they are perpendicular. So this triangle is a right angle triangle. Now this side it is 2x plus y minus 9 equals 0. This is x minus 2y plus 3 equals 0, and this is x plus y equal to 5. Now here the standard result is radical center on three sides of a triangle as diameter is the orthocenter of this triangle. So this radical center will be orthocenter. And since it is a right angle triangle, its orthocenter will be at this point where it is making an angle of 90 degrees. So basically this point is intersection of these two lines. So we have to find intersection of x minus 2y plus 3 equals 0, 2x plus y minus 9 equals 0. Now we'll multiply it with 2, so we'll get 2x minus 4y plus 6 equals 0. And we subtract this, we get 5y minus 15 equals 0. So value of y is 3. And if we put y as 3, we get x as 3. So orthocenter of this triangle is at 3, 3, which in this case is also its radical center. And that's your option B.
Now the question is, the center of the circle s equals to 0 lie on this line 2x minus 2y plus 9 equals to 0, and s equal to 0 cut orthogonally the circle x square plus y square plus 4, and then s equal to 0 passes through two fixed points. Their coordinates are. Now suppose this equation s is equal to 0 is given by x square plus y square plus 2gx plus 2f by plus c equals to 0. Center of this circle is at minus g minus f, and it passes through this line. So we get minus 2g plus 2f plus 9 equals 0. So that's our first condition. And secondly, it is orthogonal to this other circle. Now 2 times g1 g2 plus f1 f2, it is equal to c1 plus c2. So from here we get value of c as 4. So that's our second equation. Now we'll put c here and we'll put the value of 2f also. So we'll get this as x square plus y square plus 2gx, and instead of 2x we'll write 2g minus 9y plus 4 equals 0. Now we can write this as x square plus y square minus 9y plus 4 plus 2g x plus y equals to 0, which is of the form sum h dash plus lambda l dash equals to 0, which is family of all the circles which pass through point of intersection of this circle s dash and this line l dash. So these two fixed points, they are basically intersection of this line and circle. So we have this circle x square plus y square minus 9y plus 4 equals to 0, and this line which is x plus y equals to 0. Now we'll write y as minus x. So it will be this 2x square plus 9x. Now we can factorize this as 2x square plus 8x plus x plus 4 equals 0. So it will be this 2x plus 1 into x plus 4 equals 0. So we'll get value of x as either minus 1 by 2 or minus 4. Now y is minus x. So these fixed points, they are minus 1 by 2, 1 by 2 and minus 4 comma 4. And that's your option B. Now the question is, a circle passes through the point 0, 1 and is orthogonal to the two circles. Then radius and center of the circle is. Now suppose equation of this circle is given by x minus h square plus y minus k square equals r square, where center is at h comma k and radius is r. Now this circle, it passes through the point 0, 1. So then we get h square plus 1 minus k square and it'll be equal to r square, and that's our first equation. Now it intersects these two circles orthogonally. Now this first circle, center is at 1, 0 and radius is 4, and we know that if circles intersect orthogonally, then c1 square, it must be equal to r square plus r1 square. Now c1 square will be h minus 1 square plus k square, and they'll be equal to r square plus 16. And that's our second equation. And the same way, c2 is 0, 0 and radius is 1. So again, c2 square will be equal to r square plus r2 square. So we can write h square plus k square will be equal to r square plus 1. Now we'll take this first equation, we'll write h square plus k square plus 1 minus 2k, and it is equal to r square. Now h square plus k square minus r square, it is equal to 1. So we'll get value of k as 1. And here we have to write h square plus k square plus 1 minus 2h, and this is r square plus 16.
Now again, h square plus k square minus r square is 1. So this is 2. 2h equals 14. Value of h is minus 7. And once we have the value of h and k, we'll put it here. Then we get r as 7. So radius of this circle, it is 7 and center is at minus 7, 1. So the correct options are B and C. Now the question is find the equation of circle cutting the three circles orthogonally. Now we know that center of the circle which cuts three circles orthogonally is going to lie on a radical center. So we have to find radical center of three circles, for which we have to find radical axis of two circles. Now from first two we can write x minus c square plus y square minus a square minus x square plus y square minus a square equals 0. Now here a square and y square will cancel, x square will also cancel, so we get c square minus 2cx equals 0. Then the value of x is c by 2. Now from first and third we can write x square plus y minus b square minus a square minus x square plus y square minus a square equals 0. We'll get this as b square minus 2by equals 0 or y equals b by 2. So radical center of these three circles will be at c by 2 and b by 2, which is the center of circle which cuts the three circle orthogonally. Now radius of this circle is equal to length of tangent from this center to any circles. So this radius will be under root of, now we'll put it here, so it will be the c square by 4 plus b square by 4 minus a square. So equation of this circle will be x minus c by 2 square plus y minus b by 2 square, and that will be equal to c square by 4 plus b square by 4 minus a square. Now if we simplify this, we'll get this equation as x square plus y square minus cx minus by plus a square equals 0. Now here the question is three circles with radius 3, 4 and 5 centimeters touch each other externally. So we have three circles and they have radius 3, 4 and 5 and they touch each other. Now we join these centers, it will form a triangle. Now suppose this is P, Q and R. Now this distance is 3, this radius is 4 and this radius is 5. Now it says if A is point of intersection of tangents to these circles at their point of contact. Now if we draw tangents to the three circles at their point of contact, they'll meet at this point, which is their radical center and which in this case is in center of this triangle. So from here, length of tangent is equal to r. So basically we have to find in radius for this circle. Now what we'll do is we'll solve this question generally and we'll work out a formula for this. So we have three circles of radius r1, r2 and r3. The three sides they'll be r1 plus r2, r2 plus r3 and r3 plus r1. Now S is a plus b plus c by 2. So S is r1 plus r2 plus r3. Now we can find area of this triangle, and area of this triangle is under root of S, which is r1 plus r2 plus r3 into S minus a, S minus b, S minus c. So there will be r1 into r2 into r3. Now we know that r is delta upon S. So there will be under root of r1 plus r2 plus r3 into r1, r2, r3 upon r1 plus r2 plus r3. So we get this formula which is under root of r1, r2, r3 upon r1 plus r2 plus r3, and that is the value of in radius which is
distance from point of intersection of tangents to their point of contact. Now we can put the value of R1, R2 and R3. So now we can write this R as under root of 3 into 4 into 5 upon, and this is 3 plus 4 plus 5, and that is 12. So value of R is under root 5, and that's your option C. Now here the question is, A and B are 2 points on x-axis and y-axis respectively. So we have x-axis and y-axis, and we have 2 points A and B on x-axis and y-axis respectively. Now 2 circles are drawn passing through origin having centers at A and B. So we have drawn 2 circles passing through origin. Now they have given the answers in terms of A and B. I think they forgot to mention that this point A is at A, 0 and this point B is at 0, B. Now here this is B and this is A. So equation of this circle is x minus a square plus y square equals a square, which is x square plus y square minus ax equals 0. And equation of the second circle is x square plus y minus b square equals b square, or x square plus y square minus by equals 0. Now first is equation of common chord. Now we know that common chord is given by radical axis, and radical axis is s1 minus s2 equals to 0. So this equation is given by s1 minus s2 equals 0. So we get this as minus ax plus by equals 0. That means this option A, it is correct. So basically this line is y equals a upon bx. Now it says midpoint of the common chord is this value. Now if we join these two centers, then basically we'll get midpoint of this chord. Now equation of AB is x upon A plus y upon B equals 1. Now we'll put y as a upon bx. So it will be this x 1 upon a plus a upon b square equals 1. So this x will be ab square upon a square plus b square. Now we put x as this value, then we'll get y as a square b upon a square plus b square. So this y will be a square b upon a square plus b square. So coordinate of this point M will be ab square upon a square plus b square comma a square b upon a square plus b square. That means this option B is also correct. Now C is AB bisects the common chord. That's a very standard statement. Line joining centers bisect chord of the circle. That means this option C is correct. And D is AB is perpendicular to the common chord. This also is a known fact. That's your option B. So the correct options are A, B, C and D. Now for C and D, we can also solve this using geometry. Now we consider two triangles, OBM and BMC. Now OB equals BC, BM is common, and these two angles, they'll be same. So these two triangles, they are congruent. So essentially this M is midpoint of OC, and this angle, it is 180, and half of this angle is 90. So basically these two angles, they are 90 degrees. Now here the question is, if the circles intersect in two distinct points P and Q, then this line passing through P and Q is. Now we know that if two circles, they intersect each other, then line passing through their point of intersection is their common chord, which is actually their radical axis. So equation of this line is radical axis, and it is basically S1 minus S2 equals 0. So if we subtract equation 2 from equation 1, we'll get this as 5ax plus c minus dy plus
a plus 1 equals 0, and they have given that if this equation is 5x plus by minus a equals to 0, then how many values of a are possible? Now, if these two equations they represent the same line, then a1 upon a2 must be equal to b1 upon b2, and it should be equal to c1 upon c2. So we'll get 5a upon 5 equals c minus d upon b equals a plus 1 upon minus a. Now this 5 and 5 will cancel. So if we take first and third, we'll get a square plus a plus 1 equals to 0. And in this case, d is less than 0. So there is no solution to this equation. So answer to this question is this option B, no value of a. Now here the question is, if r and r dash are radius of circles s equals 0 and s dash equals 0. So we have two circles, s equal to 0 and s dash equals 0, and radius of this circle is r and radius of this circle is r dash, and we are given two circles which are s upon r plus minus s dash upon r dash equals 0. Now we have to find angle between these two circles at their point of intersection. Now basically this is a standard result. These two circles, they'll intersect orthogonally. That means angle between the two circles is pi by 2. So it will be this option 3. Now one way of proving it can be, we can consider two circles which are s plus lambda s dash equals 0 and s minus lambda s dash equals 0, where s is x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equals 0, and s dash is x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equals 0. Now equation of these two circles will be given by x square 1 plus minus lambda plus y square 1 plus minus lambda plus 2 g1 plus minus lambda g2x plus 2 f1 plus minus lambda f2y plus c1 plus minus lambda c2 equals to 0, or we can write this equation as x square plus y square plus 2 g1 plus minus lambda g2 upon 1 plus minus lambda into x plus 2 f1 plus minus lambda f2 upon 1 plus minus lambda plus c1 plus minus lambda c2 upon 1 plus minus lambda equals 0. Now we find the value of lambda so that these two circles, they intersect orthogonally. Now they'll intersect orthogonally if 2 g1 g2 plus f1 f2 it is equal to c1 plus c2. So we can write 2 times g1 plus lambda g2 upon 1 plus lambda into g1 minus lambda g2 upon 1 minus lambda plus f1 plus lambda f2 upon 1 plus lambda into f1 minus lambda f2 upon 1 minus lambda, it is equal to c1 plus c2, and that will be c1 minus lambda c2 upon 1 minus lambda plus c1 plus lambda c2 upon 1 plus lambda. Now we can write this as 2 g1 square minus lambda square g2 square plus f1 square minus lambda square f2 square. Now this 1 plus lambda 1 minus lambda will cancel, and here it will be c1 1 plus lambda plus c1 1 minus lambda. So there will be 2c1, and here will be minus 2 lambda square c2. Now what we'll do is we'll take terms of
lambda together and other terms together, and also this 2 will cancel. So we can write g1 square plus f1 square minus c1, it is equal to lambda square g2 square plus f2 square minus c2. Now this is basically r1 square, and this is lambda square, and this is r2 square. So lambda is plus minus r1 upon r2. So these two circles, they'll be orthogonal if s plus minus r1 upon r2, s dash equals to 0, or we can rearrange this as s upon r1 plus minus s dash upon r2 equals to 0 will represent two circles that will intersect orthogonally. So their angle of intersection will be pi by 2. Now here the question is, two circles with equal radius are intersecting at points 0, 1 and 0, -1. The tangents at the point 0, 1 to one of the circles passes through center of the other circle. Then distance between centers of these circles is. Now we have two intersecting circles, and these two circles, they have equal radius and they intersect at (0, 1 and 0, -1. Now it says tangent at 0, 1 pass through center of this other circle. So tangent at this point, it passes through center of this other circle. If we join it to this other center, C2, and this is C1. Now this is 90. This is R, and this is R. Then this angle, it is 45. Now if we draw this line, this angle is also 45. Now this length, it is 1. So this length is 1, and this length will also be 1. So distance between center will be simply 2, and that's your option D. Now here the question is, find the equation of the circle which passes through origin, meets the x-axis orthogonally, and cuts this circle at an angle of 45 degrees. So we have this circle which passes through origin and meets the x-axis orthogonally. That means x-axis is going to be normal. So center of this circle will lie on x-axis, that's origin, and it intersects this other circle, x square plus y square is equal to a square at 45 degrees. So this circle, x square plus y square equals to a square at an angle of 45 degrees. Now suppose the point of intersection is x1, y1, and let equation of this circle be x square plus y square plus 2gx equals 0, where center of the circle is at minus g, 0. Now we find the point of intersection, we can write x square plus y square equals a square. That means x1 will be minus a square upon 2g, and if we put x1 in this equation, we can write y1 square as a square minus a to the power 4 upon 4 g square. So we'll have y1 as plus minus a under root of 1 minus a square upon 4 g square. Now we'll find slope of the tangents for two curve. Now here we'll get 2x plus 2y y dash equals 0. That means m1 is minus x1 upon y1, and for this one we'll get 2x plus 2y y dash plus 2g equals 0. So we'll get m2 as minus g plus x1 upon y1. Now we can write tan theta, so there'll be this tan 45, m1 minus m2, so there'll be minus x1 upon y1 plus g plus x1 upon y1 upon 1 plus m1 m2, so there'll be x1 g plus x1 upon y1 square, and it is equal to 1. Now here x1 y1 will cancel, so we can write this as
mod of gy1 will be equal to x1 square plus y1 square plus gx1 with a mod sign. Now we know that x1 square plus y1 square plus 2gx1 equals 0. So from here we'll get x1 square plus y1 square plus gx1, it is equal to minus gx1. So that will be equal to minus mod of gx1. Now this g and g will cancel. If we square it, we can write y1 square is equal to x1 square. Now x1 square is a to the power 4 upon 4g square, and y1 square is a square minus a to the power 4 upon 4g square. So from here we can write a to the power 4 upon 2g square is equal to a square. Now this a square will cancel. So value of g will be plus minus a by root 2. And once we have g, we can write equation of this circle. So equation of this circle will be x square plus y square plus 2, and g is plus minus a by root 2x equals 0, or x square plus y square plus minus root 2ax equals 0. And that is the answer to this question. Now here the question is, find the equation of circle which cuts each of these three circles at the extremities of diameter. Now what does this mean? It cuts at the extremities of diameter. It simply means that our given circle, say s equals 0, which is given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0, is going to intersect this circle such that their common chord or radical axis is diameter for this circle. Now this first circle is x square plus y square minus 4 equals 0, and its center is at 0, 0. Now if we write its radical axis will be 2gx plus 2fy plus c plus 4 equals 0, and its radical axis will pass through the center. So from here we get c plus 4 equals 0, that is value of c is minus 4. So from here we get value of c as minus 4. So we'll place c with minus 4. Now this second circle is x square plus y square minus 6x minus 8y plus 10 equals 0. Now here this center is 3, 4. Now if we write its radical axis will be 2g plus 6x plus 2f plus 8y, and then minus 4 minus 10 minus 14 equals 0. Now we'll put x as 3 and y as 4. So it will be this 6g plus 18 8f plus 32 minus 14 equals 0, or 6g plus 8f, and here this is 50 minus 14 is 36. So plus 36 equals 0. So this equation is 3g plus 4f plus 18 equals 0. So that's our second equation. Now we'll take this third circle, and which is x square plus y square plus 2x minus 4y minus 2 equals 0. Its center, it is at minus 1, 2, and its radical axis will be 2g minus 2x plus 2f plus 4y, and then minus 4 plus 2, that will be minus 2, 0, and we put x as minus 1 and y as 2 will be minus 2g plus 2 plus 4f plus 8 minus 2 equals 0. Now this 2 and 2 will cancel. We'll write this as minus 2g plus 4f plus 8 equals 0. Now we'll subtract
second from first. So it will be this minus plus minus. So this 4f will cancel. We'll get 5g equals minus 10. So value of g is minus 2. And if we put g as minus 2, there will be this minus 6. So 4f equals minus 12. F is minus 3. So we'll get value of f as minus 3. Now once we have g, f and c, we can write equation to this circle. So equation of this circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0. And that is the answer to this question. It is a matching question and says a ray of light coming from the point 1, 2 is reflected at a point A on x-axis. We have a point on x-axis, and though it is not given, I think it should be given that this mirror, it is at x-axis. So we have this ray of light coming from this point 1, 2 and it passes through this point 5, 3. And this is this point A on x-axis. Now we will find coordinate of this point A. Now we know that light travels in a straight line. So what we'll do is we'll find reflection of this point about x-axis. And this suppose P, then this point will be this P dash, and this is 1, minus 2. Now we have P dash and Q. We can find equation of reflected ray. Equation of reflected ray will be given by y minus 3, and then slope of this line will be 5 by 4 x minus 5. Now we need this point on x-axis, and for x-axis we'll put y as 0. So we'll put y as 0, we'll get this as minus 12 by 5 plus 5, and that's your x. So this x will be simply 13 by 5. So coordinate of this point A is 13 by 5, 0, assuming mirror is placed at x-axis. That means this A, it matches with P. Now this second part is the equation of three sides of a triangle are given. Considering these sides as diameter, three circles S1, S2 and S3 are drawn whose radical center is at. Now if three sides are given and we draw circles with these three sides as diameter, then it is the standard result that their radical center is at their orthocenter. So basically we have to find orthocenter of this triangle. And if we look at these two sides, x plus y equals 3 and x minus y equals to 5, the product of slope is minus 1, as one of the slope is plus 1 and the other slope is minus 1. It's a right angle triangle, and if it is a right angle triangle, then its orthocenter is at the point where it is making that right angle. So basically that orthocenter is point of intersection of these two lines. So if we add them, we'll get x as 4, and if we put x as 4, we'll get y as minus 1. Radical center of these three circles, it is at 4, minus 1. That means this B, it matches with Q. So B, it matches with Q. Now we have this third question. If the straight line intersects the circle at points P and Q, then coordinate of point of intersection of tangents drawn at P and Q to the circle is. So let this point of intersection be A and let it be alpha beta. Now if this is point of intersection, then equation of chord PQ, it is given by T equals 0. So this equation will be alpha x plus beta y minus 25 equals to 0, and this equation will be same as this x minus 2y plus 1 equals to 0. So from here we'll get alpha upon 1 beta upon minus 2 equals minus 25 upon 1. So value of alpha is minus 25 and value of beta is 50. So coordinate of this point is minus 25, 50. That means this C, it matches with R. So this C, it matches with R. And finally we have this fourth question, which is equation of three sides of a triangle are given.
then we will find circumcenter of this triangle. Now, clearly, if we look at it, one of the side is x equals minus 3 by 2, which is a line parallel to y-axis. So this is x equals minus 3 by 2, and then we have this line which is 3y equals 4 or y equals 4 by 3, which is a line parallel to x-axis, y equals 3 by 4. So this is x and this is y. So essentially it's a right angle triangle. And then this third line, it is 4x plus 3y plus 9. Now we can find point of intersection of these two lines. So we put x as minus 3 by 2. We'll get this as minus 6 plus 3, y equals to minus 1. So there will be minus 3 by 2 comma minus 1. And then we will find point of intersection of this line, y equals 3 by 4 with this given line. Now we put y as 4 by 3. This actually is y equals 4 by 3. So if we put y as 4 by 3, it will be x equals minus 13 by 4. So this point will be minus 13 by 4 comma 4 by 3. So it is this triangle. Now we know that circumcenter of this triangle will be midpoint of, say, PQ. So circumcenter will be midpoint of PQ, and midpoint of PQ is minus 13 by 4 minus 3 by 2 comma 2, and here it is 4 by 3 minus 1 by 2. Now this is minus 13 minus 6 minus 19 by 8, and here this value is 1 by 6. So this D, it matches with S. So answer to this question is PQRS.